We have great on-screen chemistry. Acting is in my blood. We're just good friends. I've given myself 3 years to be number one. Numbers are for accountants. I'm an actor. I'm really looking forward to doing some meaningful cinema. I don't believe in destiny. I believe in me. Luck by Chance tells you a lot about the intricacies of Bollywood. वैसे आजकल थिएटर से तो काफी लोग आ गए ना बॉलीवुड में. Please, ये बॉलीवुड मत कहिए. I hate that word. We are the Hindi film industry. Excuse me. Starting over, Luck by Chance tells you everything you need to know about the film industry that primarily functions out of Mumbai. It is a rare occurrence in the industry, a film about the making of films. Most of the really good movies put in a lot of effort into their opening credits, and Zoya Akhtar's Luck by Chance has a fantastically assured sequence. In it, it tries to shine a light on the various artists and professions that collectively are part of the filmmaking process. The crew, the extras, the side actors, the painters, makeup artists, spot boys, caravan drivers, third and fourth assistants, welders, prop artists, canteen staff, backup dancers, choreographers, the studio guards, the projectionists, hairstylists, carpenters, tailors, audio assistants, caterers, grips, chorus singers, production assistants, script supervisors, and assistant cinematographers. The industry prides itself on being a secular, cosmopolitan, and Catholic amalgamation of a talented workforce. But when it comes to actually being stars on the screen, the industry becomes an achingly unequal place that is out of bounds of an ordinary person. 10 दिन की शूटिंग बाकी है. लव स्टोरी है पर पिक्चर में ग्रैंडियर जरूर है. भाई साहब, आप जरा पिक्चर की माउंटिंग तो देखिए. एक एक फ्रेम देखकर आप कहेंगे सतीश तूने पिक्चर पर पैसा लगाया. It is controlled very tightly by a small coterie of individuals who continuously milk it to their advantage. स्क्रीन टेस्ट. अरे स्क्रीन टेस्ट क्या होता है? सोना. स्क्रीन के लिए बिल्कुल परफेक्ट नाम है. इट इज ऑल डेस्टिनी. डेस्टिनी तुम्हें यहाँ कानपुर से पिंकी प्रोडक्शंस के ऑफिस में खींच कर लाई है. सब यहाँ लिखा होता. बस अब तुम मुझसे मिलती रहो, क्योंकि आर्टिस्ट और मेकर एक दूसरे को अच्छी तरह समझें, ये बहुत जरूरी है. और समझने के लिए साथ वक्त गुजारना है. तुम समझ रही हो ना? No film school can really truly prepare you for this industry. हॉलीवुड में हीरो बनना बहुत आसान होता है, लेकिन हिंदी फिल्मों में बहुत मुश्किल. हिंदी फिल्मों का हीरो न सिर्फ एक्टिंग करता है, बल्कि गाने गाता है, डांस करता है, कॉमेडी करता है, एक्शन करता है. भाई साहब, हिंदी फिल्म में हीरो बनने के लिए बहुत गुण चाहिए. और हीरोइन बनने के लिए सर? हाँ नहीं, मतलब उसमें भी चाहिए, उसमें भी काफी मेहनत होती है. मगर एक्टिंग एक ऐसा समंदर है जिसमें जितना गहरा उतरिए उतना गहरा होता जाए. क्यों मैक्सिमम, ठीक कह रहा हूं? जी. लेकिन आप एक बात मत भूलिएगा कि यहां टैलेंट के साथ साथ लक भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है. आई थिंक द की इज दैट यू हैव टू बी एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस. क्यों सर? करेक्ट. You have to be lucky in this industry. Just one sequence will tell you how a typical production is mounted. Actually, one day Bhabhi ji, Mrs. Romi Roli ji told me, Ranji, tu director ban. Tu director hai. Roli साहब का अपना एक style है. I've always said that he's just been like a father to me. जफर के बिना तो मैं पिक्चर इमेजिन भी नहीं कर सकता. मेरे माइंड में आएगी नहीं ना. बिजनेस ही तो सब कुछ नहीं होता ब्रदर. इमोशन भी तो कोई चीज होती है. एक्चुअली मैंने तो सोचा भी नहीं था मैं हीरोइन बनूंगी. आई वांटेड टू बी अ वेट, एनिमल्स की डॉक्टर. मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि जितना प्यार आप लोगों ने बरसों तक मुझे दिया है, अब मेरी बेटी निकी को भी दीजिए. But when mom told me Romy uncle wants to sign me, I said, what are you saying? मैं इतनी नर्वस हो गई.
But then I said, why not? The irritation of an outsider is justified. You can cut Sona's resentment with a knife. Zoya Akhtar's directorial debut is an intelligent and artfully paced film with crackling dialogues about the film industry. ये है फर्स्ट हाफ और ये है सेकंड हाफ भाई साहब. You know, she's a crocodile in a chiffon saree. सर मानता हूँ क्लीशे, लेकिन कन्विक्शन के साथ करें ना तो आज भी चलता है सर. ओए इंस्टीट्यूट, मैं ये फिल्म फेस्टिवल के लिए नहीं बना रहा हूँ. खून Coon. खून खून Coon. मैं मर्डर कर देता हूँ. Gee? परफॉर्मेंस के लिए कलर स्कीम होना तो बहुत जरूरी है. That is a lot of money riding on your waistline. Volcano of talent. Write my words, please. Volcano of talent. It even sidesteps an Act 1, Act 2, Act 3 structure. In fact, it is neatly divided into two halves. How, just by chance, someone's photos ends up on the right table, and after intermission, where this luck takes him. So is this the lead role? Of course. There is no grave conflict or danger either. Scripts like these are said to be risky and illogical to pursue. पर ये तो कोई लॉजिक नहीं है यार सफर, इतनी लॉजिक में जाओगे तो कमर्शियल पिक्चर तो बन ही नहीं सकती है. और मैं तो फिर भी जस्टिफाई कर रहा हूँ. वैसे भाई साहब ने मेंशन तो किया ही होगा कि जॉन और बिपाशा से तो हमारी बात हो ही गई है और डेट्स में भी. एंड वी आर वेरी हैप्पी. लेकिन हमारा बेसिक क्राइटेरिया है ये प्रॉपर्टी. हॉलीवुड में स्क्रिप्ट टू प्रॉपर्टी कहते हैं. यहाँ तो जी प्रॉपर्टी को ही प्रॉपर्टी कहते हैं. Of course, this industry cannot survive without plagiarizing. I don't believe this. पॉजिटिव करते. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रॉली जी. क्या? यूएस में ब्लॉकबस्टर थी ये फिल्म, सुपरहिट. मगर ये इंडिया है रंजीत, यहाँ की ऑडियंस अलग है. In the film, we have two principal characters with their under construction dreams finding companionship in each other. तीर और तलवार जैसे 2 फिल्में और भी की है मैंने, लेकिन कोई फायदा नहीं होता. You know, किसी ने कहा है कामयाबी और नाकामी इंसान खुद ही चुनता है. Success and failure are only choices we make. While their careers are intertwined, the varying level of success and fame they will achieve is down to one thing. The two sleep on a sofa in the backdrop of a skyline that is just taking shape, quite like their dream of being leading actors in the film industry. And it is anything but easy, because the industry has its own unwritten rules. मैं पढ़ती हूँ ना, प्रोड्यूसर या तो अपने बेटे को हीरो बनाता है या हीरो के बेटे को. बाहर से आने वाले को काम देता कौन है? देख बेटा, तेरे यहाँ रहने से मुझे कोई तकलीफ नहीं. But then an opportunity arises when a lead actor wants to drop out of a film. He what? He broke his leg. Arman broke his leg. In what is easily one of the best scenes of Luck by Chance in terms of both writing and execution. Zafar Khan एक image है. He's an icon. I work for Zafar Khan. और वो बार-बार मुझसे पूछ रहा है कि इस तरह का रोल करने के लिए क्या तुम्हारे पास मेरे करोड़ों फैंस की इजाजत है? This is the genius of the scene. It is the image of the actor talking and the focus is on the mirror. Even Romy Rowley, the producer, speaks back to the image and not the actor. स्क्रिप्ट बदल देंगे, रोल पॉजिटिव कर देंगे. हो गई बात. I don't believe this. पॉजिटिव करते? नहीं सोचते हैं, लेकिन ये रंजीत भाई ने जैसी डीवीडी मुझे दी थी मैंने वैसे ही लिख दिया. क्या? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रॉली जी बनेगा कैसे पॉजिटिव? अगर मैं ये बताऊं तो मैंने तुम्हें राइटर क्यों लिया? Another thing that the film does really well is brand placement, with Hrithik Roshan endorsing Synthol and its parent company Godrej. नया फ्रिज चाहिए? मतलब खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.
There's also coffee chain Mocha showing up in important scenes. वो इमरान हाशमी 1 महीने के लिए न्यूजीलैंड जा रहा है और पिक्चर रिलीज पे मुकेश पटवेल किल मी। यार ये ग्रैंडफादर क्लॉक अप कहाँ से मिलेगा तुझे? चोर बाजार ट्राई किया? अरे चोर बाजार में इतनी सुबह दुकानें थोड़ी खुली होंगी। यार I don't know, someone you know must have one. Think ना यार, you think, can you think of anyone? कोई भी? तेरे दादाजी? Vikram's street smartness is what gets him briefly to the periphery of the limelight. This shot and edit captures a seamless plan. Oh man, तूने तो कमाल कर दिया यार। Thanks a lot, huh? He is at the right place, the premiere party of a film at the Taj Hotel. But the timing of his next moves have to be just right. Hello. Thank you. I want to meet Nikki Walia. He charms both the daughter and her mother, Neena Walia, cunningly. आज मैं उन्हें फोन करके बताऊंगा कि she is still the most beautiful woman in the room. थैंक यू विक्रम। विक्रम जैसी। मेरी बेटी निकी। Hi. Okay then. Bye mom. Bye. Connections are very, very important in the industry. Luck by Chance was stuck in production for a while, but the right people behind it helped it get made and released. The degree of separation between the whole cast and crew is less than 1. For example, Javed Akhtar is the dialogue writer for the film, in which the lead character, played by Farhan Akhtar, is being directed by his sister Zoya Akhtar. So the film talks about nepotism in a very aware, self-reflexive manner. It knows what it is doing. Luck by Chance could not have been made without being an insider like the director is, or without having the privilege of getting any actor's attention and dates via just a phone call. Sure. Just look at the roster. But probably because it is so well cast, the fact that this film has more acting prowess per reel than any other film ensemble goes unnoticed. The story slips in effortlessly into the actual image and impressions of the industry, and that it lives in its own delusions, Everybody wants to work in Hollywood. and that it is two-faced. नीना जी, मैंने बहुत सोचा और मुझे लगा कि जफर का ये पिक्चर ना करना इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इस रोल की डिमांड है न्यू फेस। न्यू फेस? सर जी, मुझे लोग फ्री में भी मिले ना, मैं ना लूं। न्यू फेस। कोई स्टार सन मिलता तो अच्छा होता। दिस न्यू फेस? And when it comes to actresses, the new faces are beauty queens. तुम तो ऐसी बातें कर रही हो कि मेरी वजह से रहेगी, वरना अब तक करीना कपूर बन जाती। जमाना बदल गया, इंडस्ट्री बदल गई। आजकल सुपर मॉडल्स, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ये बन रही हैं हीरोइंस। मगर मुझ में टैलेंट है, मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। वो किसे चाहिए? देखो, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता, पर सच ये है कि कोई भी बड़ा हीरो तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा। It's also quite interesting to see how they deal with the subject of star kids. You're very lucky girl. I've heard that so many times. सब लोग को लगता है कि स्टार किड्स को सब कुछ ऐसे ही मिल जाता है। इतना इजी नहीं है। हम लोग पे एक्सपेक्टेशंस कितने होते हैं। Now I'm going to be compared to my mom, you know. मौके मिलते नहीं सोना, बनाए जाते हैं। कामयाबी हम तक नहीं आती, विक्रम जय सिंह। हमें कामयाबी तक जाना होता है। Not a single song in the film is lip-synced, which again is not very common. However, Luck by Chance gives a glimpse into the technical aspects of filmmaking, like the production of a romantic number.
It feels like a song is being lip synced with just a slight audio delay. तेरे मेरे प्यार की दास्तां सुनती है ये फिजा सुनती है ये ज़मीं सुनता है आसमां The technicians will come and go, but for someone to truly breach the fortress and flirt with fame, Lady Luck has to be smiling, and the circumstances have to align. उसने तुम्हें थैंक यू बोला? This is put into words quite well by the film dynast and mogul Karan Johar, who is playing himself. इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स ऐसे ही तो आते हैं, कोई अलग तरह का रोल लिखता है, बड़ा स्टार नहीं करता, एंड फाइनली एक नए लड़के को ब्रेक मिल जाता है, सिंपल. जैसे कि डर, बाजीगर, I mean बहुत सारे स्टार्स ने नहीं की, फाइनली वन मैन डिड इट, शाहरुख खान. And the best advice to an actor or anyone in general comes from the ultimate outsider. लेकिन एक बात मैंने बहुत जल्दी समझ ली थी. उन्हें मत भूलो, वे तुम्हें तब जानते थे जब तुम कुछ नहीं थे. क्योंकि बस यही है जो तुम्हें हमेशा सच बोले. जैसे अभी जो वेस्ट कोट में हमारे साथ स्कूल में थे. Again, the film doesn't build to an explosive climax. It gently resolves the plot points in a very satisfying manner. कभी किसी ने मुझसे कहा था कि इंसान अपनी कामयाबी और नाकामी खुद चुनता है. Film City. This kind of screenplay is not luck. For all its glitz, there is a sincere, efforted authenticity to Luck by Chance, which makes a very strong case for being Zoya Akhtar's finest film. तो अब मुझे मिल रहे हैं 5 नाक. बिजनेस ही तो सब कुछ नहीं होता ब्रदर, इमोशन भी तो कोई चीज होती है. Good shot, guys. Are you okay?